أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू ऐसे एंड द नेम ऑफ दैट ऐसे इज़ अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा. इफ़ ब्रेड इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ, रिक्रिएशन इज़ अ क्लोज सेकेंड. अगर ज़िंदगी की पहली ज़रूरत खाना है ना, तो जो तफरी है वो दूसरे से करीब तर है. तफरी करना बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है. ये एडवर्ड बेलामे ने बोला. यू डिड हैव हेयर्ड अबाउट अ फेमस सेइंग दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय. आपने यकीनन ये सुन रखा होगा इस मशहूर कहावत के बारे में कि हर वक्त काम करते रहना, खेलना नहीं, ये जैक को एक काहिल लड़का बना देता है. जैक से मुराद यहाँ पे हर एक शख्स होगा, खाली जैक की बात ही ना करें. The world where we are living in is full of materialistic pursuits of hectic routine. Materialistic कहते हैं मादियत परस्त, जो चीज़ों की ख्वाहिशात होती हैं ना, मादियत परस्त. और परसूट्स कहते हैं खुशियाँ, चाहतें, जो मर्जी बोलें. हैक्टिक परेशान को. तो आप अगली बात कि वो दुनिया जहाँ पर हम रह रहे हैं ये मादियत परस्त चाहतों से और परेशान कुन सरगर्मियों से भरी पड़ी है. अ मैन फ्रॉम dawn टू dusk strives only to make both ends meet. कहते हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करना. स्ट्राइव्स का मतलब होता है जद्दोजहद करना. एक इंसान बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने के लिए सुबह सवेरे से शाम तक जद्दोजहद करता है. He gets up early in the morning and starts working, and when he comes back he is much exhausted. वो सुबह सुबह उठता है और काम करने लग जाता है. जब वापस आता है तो बहुत ज़्यादा थका होता है. In his monotonous routine, अपनी इस मुसलसल जारी रहने वाली सरगर्मी में he does not have time for himself. उसके पास तो अपने लिए वक्त नहीं होता. He does not have time to spend in the company of nature. उसके पास कुदरत के फितरत के ज़ेर असर रहकर कुछ वक्त गुजारने के लिए टाइम नहीं होता. Man of today must have some time so he may live some moments for himself only. इंसान के पास ज़रूर फारिग वक्त होना चाहिए. लेयर कहते हैं फारिग वक्त होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़ात के लिए कुछ लम्हात गुजार सके. ट्रैवल एंड चेंज ऑफ प्लेस इम्पार्ट न्यू विगर टू द माइंड. सफ़र करना और जगह को तब्दील करना, कहते हैं ना हवा बदली करना, ये आपके जहन को एक नई ताकत बख्शते हैं. इसे विगर को कहते हैं, ताकत को. Leisure time activities give us a better level of confidence, good memory, emotional and mental strength, optimism, excellent decision-making skills, independence and knowledge about things and places as well. पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं. कॉन्फिडेंस कहते हैं जनाब एतमाद को. गुड मेमोरी अच्छा हाफजा, इमोशनल जज्बाती, मेंटल जहनी, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को. फिर उसके बाद ऑप्टिमिज्म कहते हैं पुरउम्मीद रहना. एक्सेलेंट डिसीजन मेकिंग स्किल बेहतरीन फैसला करने का हुनर. इंडिपेंडेंस आज़ादी, नॉलेज इल्म. अब पढ़ते हैं. फारिग वक्त की जो सरगर्मियां हैं वो इंसान को एक बेहतर लेवल या एक बेहतर अमल फराहम करती हैं, एतमाद का, अच्छा हाफजा फराहम करती हैं, जज्बाती और जहनी ताकत मिलती है, पुरुमीद रहता है इंसान, बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत उसमें आती है, आज़ादी आती है और चीज़ों और जगहों से मुतल्लिक उसमें इल्म भी आता है. लास्ट मंथ आई विद माई फेलोज मेड अ प्लान टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेस. पिछले महीने मैंने अपने दोस्तों के साथ एक तारीखी जगह पर सफ़र करने का मंसूबा बनाया. आफ्टर मच पॉन्डरिंग, काफ़ी गौर व फिक्र के बाद वी डिसाइडेड टू विजिट वन ऑफ द सीक्रेट ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान. हमने पाकिस्तान के छुपे हुए ख़जानों में से एक जगह पर सफ़र करने का फ़ैसला किया जो कि है नूर महल. इट इज़ कॉल्ड हिडन जेम ऑफ बहावलपुर. इसे बहावलपुर का छुपा हुआ हीरा कहा जाता है.
On a Saturday morning we started our journey towards बहावलपुर. एक हफ्ते की सुबह हमने बहावलपुर की जानिब अपना सफ़र शुरू किया. नूर महल is 346 kilometers away from लाहौर पाकिस्तान. नूर महल लाहौर पाकिस्तान से 346 किलोमीटर दूर है. We reached there in almost 5 hours. हम तकरीबन 5 घंटे में वहाँ पहुँचे. We enjoyed a lot during our way towards बहावलपुर. बहावलपुर की जानिब जाते वक्त हमने बहुत लुत्फ़ उठाया रास्ते में. Monuments are for living, not for dead. Monuments कहते हैं तारीखी या यादगार चीज़ें. तारीखी या यादगार चीज़ें ये ज़िंदा लोगों के लिए होती हैं, मुर्दा लोगों के लिए तो नहीं होती ना. मुर्दा लोग तो खुद एक याद बन जाते हैं. अगली बात जनाब, we had heard from person that if one wants to enjoy the beauty of Noor Mahal, he should visit it without a guide. हमने किसी से सुन रखा था कि अगर कोई चाहता है कि नूर मेन गेट और मरकज़ी गेट में दाखिल हो गए. We read about the history of this महल. हमने इस महल की तारीख के बारे में भी पढ़ा. The palace was built by the 5th ruler of Bahawalpur state Nawab Sir Muhammad Sadiq, the Shah Jahan of Bahawalpur, who is renowned for his passion of constructing beautiful buildings. जनाब, ये जो महल है इसको बहावलपुर रियासत के 5वें हुक्मरान नवाब सर मोहम्मद सादिक ने बनाया, जिन्हें शाहजहां ऑफ बहावलपुर के नाम से जाना जाता है, जो मशहूर थे. रिनॉर्ड मशहूर होना, जो मशहूर थे बहुत ही खूबसूरत इमारतों को बनाने के जज्बे को लेकर. This beautiful building was built by a British engineer named Heenan in 1875 at a cost of 1.2 million. इस खूबसूरत इमारत को एक बरतानवी इंजीनियर जिसका नाम हीनन था, उसने 1875 में 1.2 मिलियन यानी 12 लाख रुपए की लागत में बनाई. आपको इतने कम. उस वक्त जनाब एक मरला जो ज़मीन थी वो 1 रुपये से भी कम थी. ये तब की बात की जा रही है, तब तो 12 लाख आज के अरब बन रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं जनाब. एन ओल्ड बिल्डिंग इज़ लाइक अ शो. एक ओल्ड बिल्डिंग एक शो की तरह है, दिखावे की तरह है. यू स्मेल द साउल ऑफ अ बिल्डिंग. आप एक इमारत से इसकी असल को, रूह को सूंघते हैं. एंड द बिल्डिंग टेल्स यू हाउ टू रीडू इट. और बिल्डिंग आपको बताती है कि इसको दोबारा बहाल कैसे करना है. अंडू रीडू का पता होगा ना आप सबको, ये वहीं से है रीडू. द पैलेस इज़ नाउन फॉर इट्स ब्यूटीफुल कलरफुल अट्रैक्टिव एक्सटीरियर. एक्सटीरियर कहते हैं बैरूनी हिस्सा. ये जो पैलेस है ये अपने रंग बरंगे मुतासिर करने वाले बैरूनी हिस्से से की वजह से जाना जाता है. विच इज़ मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक्स, जिसे खूबसूरत ईंटों से बनाया गया. दैट मेक दिस महल अ यूनिक पीस ऑफ हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, जो इस महल को तारीखी फ़न तामीर का एक बेहतरीन शाहकार बनाते हैं. Noor Mahal's distinguishing architectural feature is the use of 5 domes built in the traditional style. नूर महल की सबसे नुमायाँ फ़न तामीर की जो खसूसियत है वो इसके 5 महराब हैं, जिन्हें रिवायती अंदाज में बनाया गया. When we saw those domes, जब हमने उन महराबों को देखा, we were amazed by its beauty. हम उसकी खूबसूरती से मुतासिर हैरान हो गए. It is impossible for me to describe you the feeling that I was having at the time of visiting the majestic and magical historical palace. जनाब, majestic कहते हैं बेहतरीन, ठीक है, यानी हिसार में कैद कर देने वाली, और मैजिकल जादुई. मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं आपके सामने अपने उन जज्बात का इजहार करूं जो उस वक्त मैं उस जादुई और दिल को छू जाने वाले महल को, तारीखी महल का जब विज़िट कर रहा था, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अपने जज्बात का इजहार आपके सामने कर सकूं. We saw many old things present. हमने उसमें मौजूद बहुत सी पुरानी चीज़ों को देखा. It includes many नवाब्स used things. इसमें बहुत से नवाबों की इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी. There are many old swords. वहाँ पे बहुत सी पुरानी तलवारें हैं. Old currency notes and coins. पुराने करेंसी के नोट और सिक्के हैं. Old laws that were made in that time. पुराने कवानीन जिन्हें उस वक्त में बनाया गया. An old piano that नवाब्स used to play. और एक पुराना पियानो था जिसे नवाब प्ले किया करते थे. We also saw the old architecture of furniture.
ہم نے آرٹیکلز آف فرنیچر، ہم نے وہاں پہ بہت سے فرنیچر دیکھے یوز بائی نوابز ایٹ دیٹ ٹائم، جنہیں اس وقت کے نواب استعمال کیا کرتے تھے. یاد رکھیں کہ فرنیچرز کوئی ورڈ نہیں ہوتا، فرنیچر ہوتا ہے. اگر آپ نے زیادہ فرنیچر کو شو کرنا ہے تو آرٹیکلز آف فرنیچر یوز کریں گے. ناؤ اب نو ون از الاؤڈ ٹو سٹ آن دیم، کسی کو ان پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. آرڈنری پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ دا تھنگز ایز ویل، عام لوگوں کو تو انہیں چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ اصل میں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چھونے میں بھی کانٹے لگے ہوتے ہیں تو پرابلم ہوتی ہے، تو اس لیے چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ نہ ہی کریں جی، مہربانی ہے آپ کی. There is also a long wall in it that contains imaginary pictures of nawabs. ایک لمبی دیوار بھی ہے جس میں نوابوں کی ایک تصوراتی تصاویر موجود ہیں. Only one picture is real، صرف ایک تصویر اصلی ہے. All others are imaginary، باقی ساری تخیلاتی ہیں. There was also a prison cell inside the محل، اس محل کے بالکل ساتھ ہی ایک قیدیوں کو بند کرنے والا ایک کال کوٹری بھی موجود تھی یا جیل بھی موجود تھا. I cannot look at modern buildings without thinking of historical ones. تاریخی عمارتوں کے بارے میں سوچے بغیر میں ماڈرن بلڈنگس کو تو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. There are various stories regarding its construction. اس کی تعمیر کو لے کر بہت سی کہانیاں موجود ہیں. It is said that نواب عدنان عباسی IV، یہ کہا جاتا ہے کہ نواب عدنان عباسی چہارم had the palace made for his wife، جو تھا اس نے اپنی بیوی کے لیے یہ محل بنایا تھا. یہ کہانی بھی سننے کو ملی. However, she was only there for one night، تاہم وہاں پر وہ صرف ایک رات کے لیے رہی. As she happened to see the adjoining graveyard from her balcony، کیونکہ اس نے وہاں سے اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بالکنی صحن سے اس کے ساتھ جو قبرستان تھا اسے دیکھ لیا. And refused to spend another night there، اور اس نے انکار کر دیا کہ میں وہاں پر ایک رات اور نہیں گزاروں گی، ایک رات بھی نہیں گزاروں گی. So it remained unused during his reign، بس اس کے دور حکومت میں یہ استعمال نہیں ہوا. آگے بڑھتے ہیں جناب، نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. وین وی کیم آؤٹ آف دا پیلس، جب ہم اس محل سے باہر آئے تو وی ور سرپرائز ٹو سی دیٹ اٹ واز گیٹنگ ڈارک، ہم حیران رہ گئے یہ دیکھ کر کہ اندھیرا چھا رہا تھا. وی اسپینڈ آلموسٹ 4 hours there، whereas I was thinking that we had a lot of time and we could visit a surrounding area of that historical place. ہم نے وہاں پر تقریباً 4 گھنٹے گزارے، جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اور ہم جو اس تاریخی محل ہے اس کے ارد گرد کے علاقے کو بھی وزٹ کر سکتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی، لیکن بدقسمتی سے، وی ہیڈ ٹو کم بیک وداؤٹ لوکنگ سینز آف سراؤنڈنگ ایریا آف نور محل. ہمیں نور محل کے ارد گرد کے علاقے کو دیکھنے کا بھی، کہ جو مناظر تھے ان کو بھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا اور ہمیں واپس آنا پڑا. We could not visit the graveyard there as well، ہم وہاں پر موجود جو قبرستان تھا اسے بھی نہیں دیکھ پائے. While departing from there، وہاں سے نکلتے وقت، we also came to know that، ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ in October 12 1997 the army took over the possession of the palace and restored it. possession کہتے ہیں جناب ملکیت کو، restored بحال کرنا. نکلتے وقت ہمیں اس بارے میں پتہ چلا کہ 12 اکتوبر 1997 میں آرمی نے اس محل کی ملکیت کو حاصل کر لیا اور اسے بحال کیا. Later it was used as an army club، بعد میں سے ایک آرمی کلب کے طور پر استعمال کیا گیا. The building is still in army's possession، بلڈنگ ابھی بھی آرمی کی ملکیت میں ہے. We enjoyed the visit very much، ہم نے بہت زیادہ اس وزٹ سے لطف اٹھایا. It was a memorable visit، یہ ایک یادگار وزٹ تھا. And will remain always fresh in our minds، اور یہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گا. اگلی بات، نیو آئیڈیاز مسٹ یوز اولڈ بلڈنگس، نئے خیالات کو ضرور پرانی بلڈنگس کا استعمال کرنا چاہیے. مجھے امید ہے بیٹا کہ ایسے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے کام کے ساتھ بہت جلد ہم حاضر ہوں گے، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.